हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एग्ज़ाम क्रैक टीचिंग पर। हमने पहले 2 वीडियो में हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के क्वेश्चन 1 से 15 को सॉल्व किया था। आज की इस नए वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट 16 टू 30। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपना अगला सेट ऑफ क्वेश्चन और देखते हैं क्या नया सीखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16, अ marker enzyme of mitochondria which is located in the matrix. You all know mitochondria have a different compartment, outer membrane, inter membrane space, inner membrane and matrix. आउटर मेम्ब्रेन अगर देखो तो वहाँ पे आपको ऑक्सीडेजेस मिलते हैं। इंटर मेम्ब्रेन स्पेसिस में एंजाइम लाइक एडिनाइलेट काइनेज। इनर मेम्ब्रेन contain respiratory chain complex enzyme. Including succinate dehydrogenase, okay? And in matrix, enzyme for TCA cycle. So, citrate synthase, a key enzyme of TCA cycle present inside the mitochondrial matrix, widely used as a marker enzyme for matrix. So please note down the answer will be citrate synthase. Succinate dehydrogen नहीं होगा because it is present in the, as I told you, it is present in the inner membrane. Okay, now move to the next question number 17. Which one of following correctly define the function of microfilament? Microfilament, these are the actin filament. These are the actin filament. अगर आप देखोगे तो इसका मेन फंक्शन है, it involved in pollen tube growth. Okay, pollen tube growth toward the embryo. They help in a cell shape, intracellular transport, cytoplasmic streaming and pollen tube growth by actin filament polymerizations. Okay, not spindle fiber, no cilia flagella. These are cilia flagella. These are made of microfilament plus dynein. Okay, serve as a template for construction of cell. No, that is cellulose synthase, not actin. No actin. Okay, help in attachment of spindle fiber. No, it's wrong. कोई बता सकता है स्पिंडल फाइबर में कौन हेल्प करता है? तो इट इज माइक्रोट्यूब्यूल. ओके, माइक्रोट्यूब्यूल. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर स्टार्ट चेक पॉइंट ऑफ ए सेल साइकिल. अगर आप सेल साइकिल देखते हो तो इस तरह से G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज. ओके, और जैसे जैसे हम मूव करते हैं तो यहाँ पे ना लेट G1 में चेक पॉइंट्स होंगे, यहाँ पे चेक पॉइंट होगा, इधर चेक पॉइंट होगा. सो डिफरेंट चेक पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं. इट इज़ लोकेटेड इन द मिड G1 फेज ऑफ सेल साइकिल. यस, अगर आप सेल साइकिल देखोगे चेक पॉइंट्स होते हैं. इट इज़ लोकेटेड इन द S फेज ऑफ सेल साइकिल. It is located in the S phase of cell cycle. It is regulated by D-type cycline along with the CDK, right? It regulates entry of cell in S phase. Yeah, it regulates entry of cell in S phase of cell cycle. It is located in S phase of cell cycle. So this will be the wrong. Okay. Now move to the next. Question number 19. Lysosomes. You all know lysosome. That is, lysosome, we also call that it as a, we called it as a suicidal bag. The destruction of aged RBC and dead cell. That's why we called it as a
suicidal bags. Okay, and peroxisome. अगर आप बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड पूछेंगे कहाँ होती है तो दैट इज इन peroxisome. Rough endoplasmic reticulum, you well know protein synthesis take place, and Golgi for the packaging of secretory material for being discharged. So the answer will be, let's see, first ka third. So here the third, second ka first. Okay, so this is eliminated, ye eliminated, bacha ye do. So you can easily find out the answer. Now move to the question 20. Here the column A with enzyme and column B with the function. DNA gyrase, topoisomerase 2, DNA प्राइमेज, DNA डी लाइगेज. जो इजी है वो देखो, DNA लाइगेज का काम होता है ज्वाइन करना. तो कोवलेंट क्लोजर ऑफ निक इन शुगर फॉस्फेट बैकबोन इज दिस. एंड DNA प्राइमेज का काम है सिंथेसिस ऑफ RNA प्राइमर. नाउ the confusion between DNA gyrase and topoisomerase 2. So note down this, topoisomerase 2 is a ATP dependent. Okay, note down this, ATP dependent, and it break the double strand bond, whereas DNA gyrase break the single bond. Okay, DNA topomer is 2 double strand break and topoisomerase 1 single strand break. So note down please this, ATP dependent transient. Now move to the question number 21. Which of following is commonly used as a cryoprotectant in germ plasm conservation? So the answer will be very easy, DMSO. DMSO. Actually what happened, it reduce ice crystal formation inside cell. Okay, so clear. Sucrose is a osmoprotectant. Now move to the next question, number 22. Which one of following DNA repair mechanism can remove chemically modified base from DNA? The answer will be, अगर आपने DNA repair mechanisms ध्यान से किए होंगे देन आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे कि इसका आंसर जो है बेस एक्सीजन रिपेयर होगा. बेस एक्सीजन रिपेयर रिमूव केमिकली अल्टर्ड बोन लाइक यूरासिल फ्रॉम डीएमिनेशन of cytosine. Okay, now the next is like in अगर आप न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर देखोगे तो वहाँ पे यूवी थायमिन डाइमर फॉर्म होता है. यूवी थायमिन डाइमर की जब भी बात करेंगे द आंसर विल बी द न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर. रेप्लिकेशन एरर की वजह से मिसमैच रिपेयर होता है. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट. Defect in DNA repair mechanism does not cause xeroderma. Defect in DNA repair mechanism does not, DNA repair में अगर कोई डिफेक्ट बच जाता है does not cause, तो ये क्या कॉज नहीं करेगा? xeroderma पिगमेंटेशन, अटैक्सिया, ब्लूम सिंड्रोम, एल्बिनिज्म, नॉट. अगर आपको ध्यान होगा तो xeroderma इज एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर. अटैक्सिया
is double stranded break repair, and Bloom syndrome is helicase defect. प्लीज़ नोट डाउन बिकॉज नेक्स्ट टाइम में भी आप इनमें से कुछ पूछ लिया जाए किसी एग्ज़ाम में. एंड एल्बिनिज्म, यू ऑल नो, मेलानिन synthesis defect, not DNA repair. तो हमसे पूछा ही क्या है, हमसे पूछा डिफेक्ट इन DNA रिपेयर मैकेनिज्म डज नॉट कॉज albinism because albinism is due to the मेलानिन सिंथेसिस डिफेक्ट. जब मेलानिन की सिंथेसिस नहीं होगी तो एल्बिनोस बनते हैं. जीरोडर्मा न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर, अटेक्सिया डबल स्टैंडर्ड ब्रेक रिपेयर, ब्लूम syndrome is a helicase defect. Now move to the question number 24. A subunit of prokaryotic RNA polymerase which is not a part of core enzyme, okay, but play a significant role in a transcription initiation process. This is important. Core enzyme alpha 2, beta, beta dash, and omega. Another is sigma factor which bind to promoter and ensure transcription initiation, okay, and here it is for elongation. So the answer will be कौन सा है जो कोर एंजाइम का पार्ट नहीं है, तो ऑब्वियसली that is sigma. The answer will be sigma. Now move to the question number 25. Addition of methyl guanosine cap, okay, addition of methyl guanosine cap, splicing of interone, you know interone, that is non-coding, and a tailing, capping and a tailing, adenine is specific for, so you all know it is for messenger RNA. Okay, जो प्री मैसेंजर RNA है, प्री मैसेंजर RNA undergo capping, splicing and polyadenylation. Now move to the question 26. The 7 nucleotide long reserved polypurine tract located upstream of AUG initiation codon in prokaryotic messenger RNA is known as. So it's a very important and basic question. So answer will be the Sine-Dalmargo sequences. In prokaryote, Sine-Dalmargo sequences align ribosomes with start codon. So AUG के साथ होंगे. Okay. Pibnobox, that is -10 upstream Tata box. Kozak sequences यूकेरियोट्स में होते हैं ट्रांसलेशन इनिशिएशन. जब भी ट्रांसक्रिप्शंस इन प्रोकैरियोट की बात करेंगे तो उसमें आंसर आएगा आपका दैट इज Sine-Dalmargo sequences, okay, and it is located where with start codon AUG. Now move to the next question number 27. Which of following is transcriptional inhibitor? So you will see actinomycin D is only transcription inhibitor because remaining 3 chloroamphinicol tetracycline puromycin, these are a translation blocker. Okay, now move to the question number 28.
Which of following is an example of post-transcriptional gene regulation mechanism? So RNAi, that is RNA interference, use small RNA to silence the gene expression after transcription. So the answer will be the RNA interference is an example of post-transcriptional gene regulation mechanism. The remaining are the histone acetylation, regulate transcription, DNA methylation, also regulate transcription, nucleosome remodeling. These are the transcriptional regulation. Okay, now move to the question number 29. Female germ unit consists of which of following? So it's a very common: egg cell, center cell, and antipodal. Okay, now move to the next. Which of following type of embryo sac is the most heterogeneous? So it is most common question, and the answer will be Adoxa type of embryo sac is most heterogeneous type. And अगर most common पूछ लिया तो polygonum. It is most common monosporic 8 nucleated. Adoxa very rare. Okay. तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन 16 to 30 हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक बटन दबा दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर की या सेट की या पीजीटी की. तो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगले पार्ट में हम कवर करेंगे क्वेश्चन 31 to 50, जिसमें आएंगे और भी ट्रिकी क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट, क्लैरिटी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन हैप्पी लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय.